everyone. Today I am going to teach the question answers of the poem The Aunt Jennifer's Tiger. Here is a summary. The poem is about a woman named Aunt Jennifer who is unhappy and oppressed in her marriage. She expresses her inner desires and aspiration through her needlework, where she creates a panel of tigers that are free, fearless, and confident. The tigers represent everything that Aunt Jennifer's is not, but wishes to be. She struggles to pull the needle with her fingers, which are weighted down by her husband's wedding ring. The ring symbolizes the male-controlled authority and domination that she suffers from. Even after her death, her hands will remain terrified and trapped by the ordeals of her life. However, the tigers that she made will continue to prance, proud and unafraid, showing her artistic legacy and spirit. In this summary, आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही दुखी थी और अपने मैरिज से खुश नहीं थी. शी एक्सप्रेसेस इनर डिजायर. उन्होंने अपनी इनर डिजायर एक्सप्रेस किए थ्रू द निडल वर्क. उन्होंने पैनल ऑफ टाइगर्स बनाए और वो शो कर रहे हैं कि टाइगर्स कितने फ्री, फियरलेस और कॉन्फिडेंट जिंदगी जीते हैं. वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो इस ढंग से फ्री, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट जिंदगी जीना चाहती थी, बट आंट जेनिफर उस टाइम इस टाइप से जिंदगी नहीं जी पा रही थी. शी स्ट्रगल्स टू पुल द निडल विथ हर फिंगर्स. और फिंगर्स निडल वो बहुत मुश्किल से कपड़े के अंदर डाल पा रही थी क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गई थी और उसने हस्बैंड की जो वेडिंग रिंग थी, उनके जो मेल कंट्रोल अथॉरिटी और जो डोमिनेशन था, उससे काफी सफर कर रही थी. इवन ये भी था कि वो अपनी डेथ तक इसी डोमिनेशन को वो सहन करना है. वो डरी हुई रहती है और ट्रैप, और जो ऑडियंस है, जो उनके जिस ढंग से उन्हें जीना है वो उसी टाइप से जी सकती है, वहां से वो निकल नहीं पा रही है. However, the tigers she made will continue to prance. और जो भी टाइगर्स है वो जंप करते रहेंगे, अपने आप को प्राउड फील करते हैं और अनअफ्रेडली वो जंगल में खेलते रहते हैं. और ये जो आर्टिस्टिक लेगेसी है और स्पिरिट, वो ये सब शो करता है कि वो इसी ढंग से लाइफ को जीना चाहती है. और ये जो आर्टिस्टिक लेगेसी है वो उस हर समय उस क्लोथ पर शो बनी रहेगी. Central idea. The central idea of the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich is the exploration of the constraints and oppression that women, particularly the older generation, have experienced in the male-dominated society. ये पोयम जो सेंट्रल आइडिया ये बता रहा है, इस पोयम में ये बताया जा रहा है कि किस ढंग से ओल्ड जनरेशन में लेडीज को कितना दबना पड़ता था, किस ढंग से वो अपनी लाइफ को जीती थी. उस टाइम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी. The poem uses Aunt Jennifer's creation as a tapestry featuring tigers to symbolize her suppressed desires and a struggle to find the voice and the freedom in the world that was confined her. और आंट जेनिफर ने जो कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की और उसमें टाइगर्स को शो किया है, उसमें ये बताया गया है कि उनकी डिजायर क्या थी और वो किस ढंग से स्ट्रगल कर रही थी अपने फ्रीडम के लिए. और उन्होंने अपने उस एम्ब्रॉयडरी में सब कुछ बता दिया कि किस ढंग से उन्हें जिंदगी जीनी थी. The tigers in the tapestry represent the power and strength that Aunt Jennifer yearns for. वो Aunt Jennifer इस ढंग से पावर और स्ट्रेंथ की लाइफ जीना चाहती थी, बट वो नहीं जी पाई, but cannot attain in her own life. The poem highlights the theme of the woman's
empowerment, and the lasting impact of social expectations and the gender roles on women's life. पोएम्स वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताते हैं और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं और पहले जो जेंडर्स का रोल रहता था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी किस ढंग से वुमेन को दबाया जाता था दैट इज शोन इन द पोएम क्वेश्चन आंसर्स हाउ डू denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitudes? Answer. Tigers live in a forest as free as air. They are known for their strength and fearlessness. The two words, denizens and chivalric, reveal the true status and attitude of these wild cats. Denizens means a person, animal or plant that lives or is found in a particular place. That is Nivasi. Chivalric means shurveer. Next one. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? In the second stanza, why is she finding the needle so hard to pull? Answer. Aunt Jennifer's life, it is obvious, has been unhappy one. She had to make do with a despotic husband. Naturally, she grew weak in body and spirit. So weak that it becomes a tough task for her to do the embroidery with a needle. Despotic means तानाशाही जो उनके हस्बैंड की तानाशाही उन पर चल रही थी उस वजह से उनकी बॉडी काफी वीक और बहुत ही वो वीक हो चुकी थी. Next one. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Answer. It suggests the weight of the harsh and the tough experience of Aunt Jennifer's married life. वो ये बता massive weight of uncle's wedding band ये बताते हैं कि उनने जो harsh और tough experience जिया है वो जो उनकी married life में वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. The image is quite suggestive. The wedding band is symbolic. It represents the unbreakable bond of marriage between the husband and the wife. और ये रिप्रेजेंट करता है जो बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो अनब्रेकेबल बाउंड होता है आफ्टर मैरिज ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. On what or whom the Aunt Jennifer terrified in the third stanza? In the third stanza, the poet refers to Aunt Jennifer's terrified hand. The old unhappy memories are still fresh in her mind. She had passed through many testing and horrible times during her married life. These ordeals crushed and suppressed her. Their effects is still visible. So she is still ringed with those ordeals that dominated her life. Terrified means बीकी बिल्ली की तरह रहना और जब किसी चीज से डर लगता है that we call it as a terrified. Ordeal means a very unpleasant and prolonged experience. उनका जो experience था वो बहुत ही खराब था. Suppressed means दबा हुआ, prevent the development, action or expression of feeling. और वो उसमें दबी हुई थी इसीलिए वो terrified hands उनके हो गए थे काफी weak हो गई थी. What was the ordeal Aunt Jennifer's is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? Answer. The word ringed refers to marriage or engagement, a ring. To circle like a ring seen on a tree trunk showing its age to dark. Aunt carries ring or marks on the torture on her frightened hand. Uncle, like the ringmaster, made her work like a tongueless maid. Tongueless maid means servant. Tongueless means चुपचाप जो काम करते रहते हैं उनको बोलेंगे tongueless maid. और जो रिंग मास्टर कौन है यहाँ पर? उनके husband, that is a uncle. Next one. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? Answer.
The tigers are prancing. Prancing means उछल कूद करना. They pace a sleek, chivalric certainty. Sleek means चिकनी, chivalric means शूरवीर, और ये बताती हैं कि वो काफी चिकने शूरवीर सर्टेनिटी शो कर रहे थे. They do not fear the man beneath the tree. Thus, they are symbols of strength, fierceness, and beauty. Aunt Jennifer, on the other hand, is weak and terrified. Her hands are finding it difficult to pull through her wool. The massive weight of wedding band sits heavily on her hand. Her terrified hands are still ringed by the ordeals of married life. The contrast highlights the intensity. और ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है. एक में टाइगर्स को शो कर रहे हैं और एक में टाइगर्स को शो कर रहे हैं कि वो कितने शूरवीर की तरह रहते हैं, और दूसरी जगह जो आंट जेनिफर है काफी वीक है और टेरिफाइड शो की है. नेक्स्ट वन, द इंटरप्ट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम. Adrienne Rich, Aunt Jennifer Tigers, rich in symbolism. The massive weight of wedding band symbolize ordeals, hardship, and worries of married life. Terrified hands and ringed with ordeals also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer physically and mentally. Next one. Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? Answer. Of course, the Aunt Jennifer wins our heartfelt sympathy. Her silent suffering, the trials and torture of married life invoke our sympathy for her. Invoke means bring or recall. The poet also highlights the suffering through the two symbols of the tigers and the ring. Poet रिंग और टाइगर को सिंबल कर कर काफी कुछ समझा रहा है. Her engagement ring turns into her virtual slave. और जो engagement ring है उसको टर्न कर दिया एक slave की तरह. The overall image of the aunt as created by the poet is that of the victim and mastered by a tyrant husband. Tyrant means तानाशाही husband. उसमें पूरी पोएम में ये बताया गया है कि उनके हस्बैंड के तानाशाही की वजह से वो किस ढंग से लाइफ को जी रही थी.